Hello students, I am Sonal Pathak from our official YouTube channel My College Buddy. I hope that you are doing great. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIT बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इस इंस्टीट्यूट को 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज विच ऑफर्स UG, PG एंड अदर कोर्सेज। This institute is also affiliated with Visvesvaraya Technology Institute. इस यूनिवर्सिटी को AICTE के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। This is a private institute which has been accredited by NBA and recognized by AICTE. अब हम इस इंस्टीट्यूट के कुछ कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। For BE course, your fees would be 2.3 lakh and the eligibility is 10+2 which will be followed by Karnataka entrance test. For MCA course, your fees would be 1.8 lakh and the eligibility is graduation which will be followed by entrance test. For MBA course, your fees would be 1.08 lakh and the eligibility is graduation which will be followed by Karnataka entrance test. KMAT. For MTech, your fees would be 1.28 lakh and the eligibility is graduation which will be followed by entrance test. For PhD, your fees would be 50,000 and the eligibility would be post graduation. अब हमने इस इंस्टीट्यूट के कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी को तो डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर को। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट्स स्टेट एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करें फॉर एडमिशन, so that is online. You have to visit the official website of the university which has been shared on the screen. The final selection of the candidate is based on the entrance test such as JEE Mains, GMAT, CMAT, CAT, etc. अब हम इस इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। There is separate hostels for girls and boys. And there is air-conditioned centralized library where you can find 49,000 plus volumes of textbooks, daily newspaper availability, online journals, and etc. अगर scholarships की बात करें, so some national and state level scholarships are given to students, which is based on merit. अगर sports facility की बात करें, so sports are highly encouraged in this institute. Here you can find 2 cricket field, 1 football field and other many indoor and outdoor games. अब हम इस इंस्टीट्यूट के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो आफ्टर 4th and 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स बिकम एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट ड्राइव। अगर हम प्लेसमेंट रेंज की बात करें सो इट्स 90 to 92% एंड वहीं देयर आर सो मेनी कंपनीज which visit the campus of this institute such as Amazon, Mercedes. अगर हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें सो इट्स 37.5 लाख पर एनम। अगर वही हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें सो इट्स 6.7 लाख पर एनम। अब हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Our first question is that how many companies visited this institute for placement drive? So yes, according to the last year highlights, 26 companies visited for the placement drive. Our second question is, does this institute promote extracurricular activities? So yes, this institute promotes extracurricular activities. Annual days are celebrated, annual fest, sports day are highly encouraged for sports lovers. So with this, we are at the end of today's video. I hope that you got all the relevant information about BIT, Bangalore Institute of Technology. So for any query, you can comment in the comment box. Our team of My College Buddy will try to reach you as soon as possible. So for more college related updates, subscribe to this channel, My College Buddy.